Hello students, this is the next lecture of exercise 10.4. लास्ट हमने डिस्कस किया था दो वेक्टर्स को अगर हमें प्रोडक्ट करना हो तो हमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने जो रिसेंट वीडियोस में हमने कंप्लीट किया। आज इस लेक्चर में वेरी फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। वेरी फर्स्ट वी टेक द इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ what become the formula of the cross product and what are the few important terms to remember before start the questions related to the cross product of two vectors. So here, like two vectors, this is a vector and b vector, and the cross product, this is some angle between these two vectors. So cross product हम इस तरह से define करते हैं, like a vector cross b vector, which is equals to with unit vector. This n cap represents a unit vector here. So this unit vector basically is perpendicular to this both vectors. Like there is a rule of right hand thumb rule. If this angle is like this, okay, then the unit vector is perpendicular but in this direction, okay. But if we see the thumb rule, according to the thumb rule, this can either like this, the unit vector depend on the rotation of the angle, this angle between them, or it can be like this, okay, in this downward direction, either upward direction or the downward direction. But here the sine of angle which become the cross product upon like this. So this is the angle. Like हमें अगर क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि what is the angle between these two vectors when the terms are given, which and especially these two vectors are performing in the cross product. So the two vectors, like when we say that the cross product of these two vector is equals to 0, clearly the cross product 0 बनाने के लिए हमें ये साइन जो है यहाँ पे वैल्यू 0 चाहिए। तो साइन 0 होता है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, like on the value of 0. If the angle is 0, it means if angle is 0, that is हम clearly ये कह सकते हैं अगर angle 0 है तो vector A and B are collinear or on a same line, are collinear we can say, or parallel, right? Or if this angle is 90 degree, it means the both A and B are perpendicular to each other. यूनिट वेक्टर तो इन दोनों का परपेंडिकुलर रहता है, तो ये दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। in that case, if it is a perpendicular, then this is sin 90 पे 1 रहेगा. In this case, the cross product जो इवेल्युएट होगा like इस तरह से, this become the answer of the cross product. The third thing to remember that here in the cross product, the cross of I cap into I cap, j cap का क्रॉस j के साथ and k का क्रॉस k के साथ is equals to 0. Now the cross product of I cross j is equals to k cap. The cross product of j and k is I cap and k cross I is j cap. और अगर हम इनके क्रॉस दिस I and j की पोजीशंस को चेंज करते हैं, like
this is I cross j. If we do j cross I, it means the rotation get changed. In that case, j cross I, it will come with minus. Further, k cross j will lead to minus of I. And the last, this I cross k is equals to minus of j cap. तो इन चीजों का, these are the basic terms. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो ये बेसिक टर्म्स अपने दिमाग में रखनी है along with this formula, so that more along with this, what more thing or we can remember some equations in term of formula. Like if we are given the two vectors a and b, and which that two vectors represent the adjacent sides of a triangle, with this given thing, what will be the area of the particular triangle? तो उसके लिए एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन हम याद रखेंगे और उन वेक्टर्स को उसकी उसी इक्वेशंस की तरह इस्तेमाल करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे. If a vector and b vector, these are the two vectors presenting a triangle, the vectors of a triangle or representing the sides of a triangle, then area in that case, area of triangle, उस triangle का area जिसको a and b vector बना रहे with some angle, is half the modulus of the cross product of a and b. और यही अगर a and b रिप्रेजेंट करते पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम्स की साइड्स को, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल कम्स टू सिंपल मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b. The last thing, how to find when the two vectors are given, how to find the cross product. इसको ओपन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to find the determinant of like this. For example, यहां से एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. Say if a vector is a1i plus b1j c1k and b vector is a2i b2j c2k, then a cross b is equals to I j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. so this is the like the way हमें डिटर्मिनेंट हमें बनाना होगा इन दो वेक्टर्स का. तो इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना आता है, लाइक हमने जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में सीखा था, इसको क्रॉस करेंगे और जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a cross b, determinant of a cross b, which help us to get the formula, help us find the area of triangle and parallelogram like the sides. So this is the information. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्वेश्चन के साथ डील कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें. सो एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करने से पहले ये सारी की सारी टर्म्स हमारे हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंगली लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.4 एंड द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज we need to find the cross product of the given two vectors, and the given two vectors a vector and b vector respectively are this. तो जैसे कि डिस्कस किया था, द मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है. तो what was the cross product a cross b, which is, because right now we don't have, हमारे पास इस वक्त एंगल नहीं है दोनों के बीच में, तो ये फॉर्मूला तो ये काम नहीं करेगा. तो हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था, द
modulus of I k k, and this is 1 minus 7 7, and 3 minus 2 and 2. तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से निकालेंगे. दिस इज लाइक डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते थे 7 to the 14, and this is minus minus plus 14 minus of j cap. This is 2 on the 2 minus 21 plus k cap, which is minus 2 plus 21. So a cross b is equals to 0 of I. This is minus minus plus 19 j cap, यहाँ से भी plus 19 k cap. So now we have a cross p 19 of j plus 19 of k, and modulus of this one is 19 square plus 19 square is 19 square root 2 is the answer. Question number 2, and the statement: find the unit vector perpendicular to the a vector plus b vector and a vector minus b vector. हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करके दिखाना है जो कि लाइक इन दोनों के लाइक परपेंडिकुलर. तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा. पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखते हैं क्या होगा. इन दोनों को ऐड करके दिस इज 4i 4j and 0k. This is a vector minus b vector. This is 3 minus 1 2i 2 minus 2 0j and 2 minus minus plus 4k. These are the two vectors. हमें इन दोनों वेक्टर्स के का एक यूनिट वेक्टर निकालना है which is perpendicular to each, जैसे हमने कल देखा था से. अब इसको हम एक काम करते हैं, a प्लस b को हम क्या लेते हैं, दिस इज द c वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं d वेक्टर का. तो अगर हम विल फाइंड फॉर द यूनिट वेक्टर c क्रॉस d निकालते हैं इन दोनों का क्रॉस, तो जो कि निकलेगा i j k अपॉन 4 4 0 2 0 4. This will be I cap. This is 4 4 the 16 minus 0 j cap. This is 16 again minus 0 plus k cap 0 minus 4 to the 8. 16i minus of 16j and minus 8k. So this becomes the vector c cross d. तो हमें इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, तो इसको क्या देते हैं से ई वेक्टर विच इज इक्वल्स टू सी क्रॉस डी. यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल्स टू the vector is 16i 16j. यहाँ से 16 square 256 256 64. This is 16i 16j 8 k cap 256 256. टोटल प्लस करके 576. तो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास बनेगा so finally unit vector will be, this is 16i 16j 8k and this is 24 plus minus, so value plus minus, it is take the 8 out,
The final answer is plus minus 2 by 3 I cap, 2 by 3 j cap, and 1 by 3 k cap is the answer for the. Now the answer for the question number 3, if a unit vector a vector make angle, uh, this is 60 degree with I, mean to say x-axis, 45 with j y-axis, and this is the acute angle with z axis with k cap. तो ये हमें निकाल के दिखाना है। पहले थीटा निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ए कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं ए वेक्टर एक्स आई वाई जे जी के। ओके, तो पहला हमारे पास वो कह रहा है दैट दिस that the vector has this angle with I. So vector A dot with I cap is equals to cos angle. So here vector A is xi yj zk dot with I cap. So this is, इसको एज इट इज आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, कॉस तो एट 60 इज 1/2, so this is I dot I1, here is x, rest are 0, is equals to like this, cos 60 is 1/2. So because the given is a vector is a unit vector, so this value also 1, so x is equals to 1/2. Similarly, the next, this vector with j cap is 5/4. So vector A again with j cap is equals to, the dot product will be like this. This time cos angle is π/4. तो यहाँ से फिर से वही प्रोसेस होगा, like एक्स आई वाई जे जी के dot j cos square root 2 45. This time j dot j1, तो वैल्यू y रहेगी, बाकी I and k will 0. So this is modulus a, j cap is 1 and this is 1 by square root 2. ये भी a वेक्टर भी यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 1 हुआ, तो we left with this. So the x coordinate is 1/2, y coordinate is 1 by square 2. तो बात हो रही है हमें जैसे ये एंगल भी निकाल के दिखाना है, तो थर्ड वन, दिस a with this k cap, इसको भी बना लेते हैं, ये एंगल हमें दिखाना है। तो यहाँ से जैसे हमने इसे ओपन किया, तो यहाँ से क्लियरली हमें हमारे पास विल लेफ्ट विद द जी के, क्योंकि बाकी आई और जे के साथ खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ जेड बचेगा, ये दोनों 1 ही है, एंड कॉस दिस वन। अब हमारे पास एक्स वाई एंड जी की वैल्यू आ गई है। तो अगर ये हमने कहा द मॉडुलस ऑफ ए इज 1, इट मींस मॉडुलस ऑफ ए, सो ए हमने माना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है। तो यहां से x एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x 1/2 है, द वैल्यू ऑफ x, इस स्क्वायर रूट को 1 के पास भेज के खत्म करें, वी हैव x, वैल्यू ऑफ x इज 1/2 स्क्वायर 1 by square root 2 स्क्वायर cos square theta 1, this is 1/4 1/2, this is 1/4 1/2 cos square theta is equals to 1. यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 3/2. The LCM of is 3/4 and cos square theta 1 minus 3/4, which is here 1/4, and cos square theta 1/4, and the value of cos theta is equals to plus minus 1/2. बिकॉज इट इज एक्यूट टॉकिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी,
तो हम नेगेटिव को छोड़ेंगे, 1/2 को उठाएंगे, तो यहाँ से पता लगेगा दैट थीटा 1/2 होता है 60 पे ऊपर π/3। तो द थीटा जो कहा गया था कि हमें निकालना है दैट एक्यूट एंगल दैट दिस यूनिट वेक्टर इज हैविंग दिस एंगल विद k कैप एंड दैट एंगल इज π/3। तो इसके बाद हमें उसने ए कंपोनेंट बनाकर दिखाने के लिए कहा था कि ए कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेगा। तो दैट वाज हमने जो लेट किया था द ए वेक्टर दिस इज x y and z। तो कंपोनेंट ऑफ ए लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए इज x, इसको इस तरह से लिख लो, ए वेक्टर द कंपोनेंट ऑफ x, x की वैल्यू 1/2 i, दिस इज 1/√2 j and the value of z is cos of theta which is equal to 1/2, again 1/2 k cap। तो हमारे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट बन के आए 1/2 1/√2 1/2। Question number 4, show that the left hand side of this statement is equal to right hand side of the statement। तो यहाँ पे very first LHS this is cross of A, यहाँ पे क्रॉस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पे when this minus of will be with cross with this bracket like this is B cross, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, दिस इज 0। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस, इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे देयर पोजीशंस, बी ए को ए बी करेंगे तो इट विल टर्न इनटू द पॉजिटिव, दिस इज 2, this is the right hand side। Number 5, and the statement is this, and from this cross product of the two vectors उसमें से हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल के दिखानी है, राइट। तो यहाँ से so the cross product of this one is I j k, this is 2 6 27 1 lambda mu is equals to 0, this comes I, this is 6 mu 27 lambda minus j, this is k cap, this is 2 lambda minus 6 is equals to 0। look at 0 वेक्टर है तो इसको भी आप इसको लिख लो 0y 0j 0k, इसके साथ कंपेयर करते हैं किसको, ये आपके पास 2 mu minus 27 along with this minus is equals to, यहाँ से 0 से कंपेयर कर लो तो यहाँ से 2 mu 27 is equals to 0, the value of this one is 27/2। ये पहला हमें जो पूछा गया था। तो ये लास्ट वाला जो है के कंपोनेंट के साथ इक्वेट किया, दिस इज 6/2 and 3। so these are the respective values for mu and lambda।